Good morning, viewers. Today we are discussing the topic colloidal dispersion. Colloidal dispersion हम फोर्थ सेम का फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का हम पढ़ रहे थे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 का, कि कोलाइडल डिस्पर्जन क्या है, टाइप्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम इसके आगे अब फर्दर जो स्टडी कर रहे थे वे थी इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो इसकी थर्ड है हमारी प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू द पॉइंट, जो है हमारा टॉपिक कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन में हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। जो हमारी थर्ड है प्रॉपर्टीज वो है आज काइनेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। कि आपका जो कोलाइडल डिस्पर्जन का फेस है वो कितना स्टेबलाइज है उसको प्रिडिक्ट करना। सेकंड है डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पार्टिकल्स। जो भी आपके पार्टिकल्स है उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है हम उनको डिटरमाइन करेंगे। वो सब हमें काइनेटिक प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा। फिर है हमारा स्टडिंग द ट्रांसपोर्ट काइनेटिक्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। की जो कोलाइडल पार्टिकल्स की जो ट्रांसपोर्ट है, जो वो वन पार्ट टू सेकंड पार्ट जो मूव करते हैं, उनकी जो स्टडी हम भी इसमें काइनेटिक प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे कि कितना हमारा पार्टिकल्स फ्लोक्यूल्स है जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स है। सो फॉलोइंग आर द वेरियस काइनेटिक प्रॉपर्टीज इन कोलॉइड्स। फर्स्ट है हमारा ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन क्या है? एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, वो प्रपोज दिस थ्योरी। ब्रोनियन मोशन में एग्जिबिट बाय पार्टिकल्स एज लार्ज एज अबाउट 5 न्यूरॉन। ब्रोनियन मोशन में क्या है, जो हमारे पार्टिकल्स है वो कितने लार्ज है और वो कितने कितने उनका साइज है। ठीक है, द थर्मल एंड एनर्जी कीप्स द पार्टिकल इन मोशन। जो पार्टिकल्स की जो थर्मल एंड एनर्जी है दैट कीप्स इन मोशन। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराव करते हैं। कहाँ पर? जो कंटेनर में जो वाल्स है वहां पर। ठीक है, दीज कोलिजन चेंजिंग द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। कि कितना हमारा पार्टिकल्स डायरेक्शन कर रहा है, कितना हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वो सारी चीजें। ठीक है, ये है हमारा ब्रोनियन मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्लास की these molecular collision keeps particles under continuous motion। जो हमारे collision particles है that keeps the particle under continuous motion। ये मतलब continuous motion में means ये हमेशा up down down to up चलते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा Brownian movement can be viewed by a light microscope and works against gravitational force। जो ब्राउनियन मोशन है, मूवमेंट है, that can be viewed, हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप में और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी ये काम करता है और इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब है हमारा ब्राउनियन मोशन कैन बी डिक्रीज और स्टॉप बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, दैट इज बाय एडिंग द ग्लिसरीन। कि जो हमारा ब्रोनियन मूवमेंट है हम उसको डिक्रीज करते हैं और उसको स्टॉप भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, दैट इज बाय एडिंग ग्लिसरीन। ठीक है, इसके बाद है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या है, जो हमारा पार्टिकल्स है डिफ्यूजिंग है वो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration until the concentration of the system is uniform throughout। ठीक है, फिर क्या है, डिफ्यूजन इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रोनियन मोशन। डिफ्यूजन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फिक्स फर्स्ट लॉ। मींस क्या है, जो इसमें डिफ्यूजिबल जो प्रोसेस होता है वो फिक्स लॉ के अगेंस्ट होता है, दैट इज फिक्स्ड फर्स्ट लॉ। एज पर फिक्स फर्स्ट लॉ, the amount of substance dq diffuses in the time dt across the plane area of A is directly proportional to the change of the concentration dc with distance travel dx। So dq is equal to minus dA dc upon dt is equal to dt। d क्या है हमारा? d is diffusion coefficient। The measured diffusion coefficient can be used to determine the radius of the particle or molecular weight। अब है हमारी विस्कोसिटी। The viscosity of the colloidal dispersion is affected by a variety of factors। जो colloidal dispersion की जो viscosity है that can be affected by the variety of the factors। अलग-अलग factors हैं। First है shape of the dispersed particles। जो spherical particle है impart the relatively low viscosity to dispersion while the particles of linear shape yield more viscous system। जो हमारा spherical particles है that impart the
relatively low viscosity होती है to dispersion while the particles of linear shape yield more viscous system. अब है affinity of the particle to the medium. If linear particles are placed in a medium, अगर जो हमारा linear particle है that are placed in a medium having low affinity for particle, these tend to assume spherical shape and the viscosity falls. अगर हमारा लीनियर पार्टिकल्स है आर प्लेस्ड इन मीडियम, किसी मीडियम में हम रखेंगे दैट हैविंग ए लो एफिनिटी, उनकी क्या हो जाएगी, एफिनिटी बिल्कुल लो हो जाएगी फॉर पार्टिकल्स, दीज टेंड्स टू अज्यूम स्फेरिकल शेप एंड द विस्कोसिटी फॉल्स. ठीक है. अब है इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स. इन जनरल lyophilic colloids have viscosity manifold greater than that of the dispersion medium. जो हमारा lyophilic colloids है have viscosity होती है that is the greater than that of the dispersion medium. Lyophobic colloids have viscosities almost equal to the dispersion medium. जो हमारे lyophobic colloids है that have viscosities almost equal to the dispersion medium. अब क्या है विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द सिस्टम अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस. जो हमारा विस्कोसिटी है इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर एक्सप्रेशन है किसका? टू फ्लो ऑफ द सिस्टम अंडर एन अप्लाइड प्रेशर. द फ्लो ऑफ dilute colloidal system is expressed by an equation developed by Einstein. N is equal to N naught, where N naught is equal to viscosity of the dispersion medium. ठीक है. N is equal to viscosity of the dispersion and phi naught क्या है? Volume fraction of particles. अब है sedimentation. Sedimentation में क्या है? The velocity of the sedimentation of spherical particles the velocity of the sedimentation of spherical particle is obtained by the Stokes law. जो sedimentation की जो velocity है वो spherical particle is obtained by the viscosity obtained by the Stokes law. ठीक है. अब है sedimentation is influenced by the gravitational force. जो sedimentation है वो influenced होता है by the gravitational force. Stokes law applied to particles larger than 0.5 μm for applying the Stokes law. Sedimentation is not a kinetic property of the colloid system by itself under normal condition. जो sedimentation है ये क्या है? Kinetic property नहीं है किसकी? colloidal system की by itself, लेकिन ये अपने आप ही अपने normal condition पर रहता है. Therefore, a stronger force must be applied to bring sedimentation of particles. इससे क्या होगा? एक stronger force applied होता है, must be applied to bring a sedimentation of particles. The velocity of sedimentation is given by v is equal to d square. Py minus के pd upon bracket close g 18 where v is equal to a rate of sedimentation, d is equal to diameter of particles and v is equal to density of the internal phase and external phase. g क्या है? gravitational constant. n क्या है? viscosity of the medium. v क्या है हमारा? rate of sedimentation and d क्या है? diameter of the particles and phi क्या है? density of the internal phase and external phase. g क्या है हमारा? gravitational constant और n क्या है? viscosity of the medium. अब है इसके बाद हमारा osmotic pressure. Osmotic pressure of colloidal solution is a colligative property useful in determining of molecular weight of the dispersed phase. क्या है? colligative property है that is useful in
determination of molecular weight of dispersed phase. ठीक है, Von Howe equation used to determine the molecular weight of colloids in dilute solution, especially polymer. Von Howe equation क्या है? That is used to determine the molecular weight of colloid in dilute solution, especially polymer. Von Howe equation is equal to CRT, where C is equal to concentration of solute particles in gram per liter. फिर है हमारा osmotic pressure exerted by the colloidal particles. जो हमारा osmotic pressure है that is exerted by the colloidal particles. R क्या है हमारा molecular gas constant और T क्या है हमारा absolute temperature. ठीक है, अब है इसके बाद replacing with Cm in equation. is equal to x is equal to Cg upon में m upon में T. फिर है Cg is equal to m RT upon में m. Cg क्या है? ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है. और क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है. r क्या है? मोलर गैस कांस्टेंट. ठीक है, अब है substituting the values of experimental observation in these gives molecular weight of the colloidal particle. सेकंड है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है और सरफेस लेयर है, इट इज कंसीडर्ड वेरी कोलाइडल सॉल्यूशन in which the surface of the each liquid particle preferentially absorbed in the positive change from the environmental aqueous solution containing the positive and negative ions due to dissolve in. ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है सरफेस चार्ज में? लेट अस कंसीडर वेरी कोलाइडल सॉल्यूशन इन व्हिच द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन वाटर इज इक्वल टू preferentially absorb positive change from any environmental aqueous solutions containing positive and negative ions due to the dissolved salt. ठीक है, अब है a region existing at the boundary of two faces and the assumes to consist of two positively charged layers, such as a layer of negative ions adsorbed on colloidal particles that attract a layer of positive ions in the surrounding electrolyte solution is called Helmholtz double layer. की जो बाउंड्री होती है टू फेस की, हम उसको एज्यूम करते हैं that consist of two positively charged layers such as the layer of negative ions and the layers of positive ions in the surrounding electronic solution. ठीक है, अब है इसके बाद हमारा पार्ट्स ऑफ डबल लेयर. इसमें क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ डबल लेयर. पार्ट्स ऑफ डबल लेयर में क्या है कि जो stern layer and diffusion layer, parts of double layer. ठीक है, इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसमें क्या है हमारा स्टर्न लेयर है दैट इज फिक्स लेयर. ये क्या है? फिक्स है. फिर है जीटा पोटेंशियल. जीटा पोटेंशियल आज तो यहाँ रख ले, कल ना हो.
ठीक है, ये हमारा जीटा पोटेंशियल और ये हमारा कोएफिशिएंट चैम्बर कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, कंप्रेशन प्रोसेस। इसके बाद हमारा द नेगेटिव चार्ज ions attract to solid surface and the positive ions repel from the solid surface। जो हमारा नेगेटिव चार्ज है that ions attract to solid surface and the positive ions repelled from the solid surface। इसके बाद हमारा in addition to electric forces thermal motion within the medium also influence the distribution of ions which produce equal distribution of all ions in solution। As a result of this effect, a diffuse layer of solution is created in which the concentration of negative ions gradually decreases and concentration of positive ions gradually increases up to a certain point of the layer। जो as a result of this topic, इस टॉपिक का रिजल्ट जाने देना। Diffuse layer of solution is carried out which the concentration of negative ions is gradually decreases and concentration of positive ions gradually increases up to a certain point in the layer where number of positive and negative ions becomes equal। Positive ions gradually increases up to a certain point in the layer where number of positive and negative ions becomes equal, thus the particles are surrounded by a tightly bound layer, Stirling layer। ठीक है, of consists of counter ions sticking to the surface of the diffusible double layer। This type of distribution of charges affected by the particles counter ions sticking to the surface of the diffusible double layer। This type of distribution of charges surrounding the particles is called electrical double layer। Nernst and zeta potential। Nernst equation, Nernst potential क्या है? The difference between the Stern layer and potential produced on the surface layer। The difference between the Stern layer and potential produced on the surface layer is called Nernst potential। Zeta potential क्या है? The rate of exchange of very poor colloidal particles is a function of charge on particles and directly related to the zeta potential। ठीक है, इसके बाद है the potential difference existing between the surface of a liquid particles immersed in a conducting liquid, example water, and the particle immersed bulk of the liquid, that is solvent, example zeta potential। The potential difference existing between the surface of a liquid, surface of a solid particles immersed in a chemical membrane। So the stable suspension is range between 30 to -30 MB। The potential is electrodynamic, that is Nernst potential, electrophoresis, the movement of charged particle which is relative to a liquid, it is suspended under the influence of an applied electric field is called as electrophoresis। क्या होता है? जो मूवमेंट होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की which also relative to the liquid is called as electrophoresis। Used to measure of zeta potential, it is electrokinetic phenomenon। If the electrokinetic phenomena is applied to a colloid,
The charge collider particles move towards the approximately same electrode. इलेक्ट्रोओस्मोसिस, हमारा इलेक्ट्रोओस्मोसिस है, इट इज द अपोजिट प्रिंसिपल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्यों? बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ काउंटर आयंस अराउंड द पार्टिकल्स around the confer confers a charge on the dispersion medium. Positive and negative charge particles are present in liquid medium. They are जो हमारा इलेक्ट्रोस्मोसिस is opposite principle to that of the electrophoresis. The atmosphere of the counter ions around the particle confers a charge on the dispersion medium. ठीक है, इसके बाद है हमारा V plus and V1. V plus and V1. V elect ये क्या है? The particles are present in the liquid medium. They are move opposite pole. This flow of liquid medium under the influence of electric field is known as electroosmosis. The pressure is called electroosmotic pressure. ठीक है, अब है इसके बाद हमारा स्टीमिंग पोटेंशियल. This is opposite of electroosmosis. If the electrodes in the electroosmosis apparatus are replaced by the galvanometer in the circuit, so no current will be detected when the liquid is stationary. If the liquid is forced through the tube, galvanometer measure the current. ठीक है, so streaming potential due to displacement of the charge equilibrated in the double layer around the solid. This technique can be used to measure the zeta potential of relatively coarse solid which would sediment the rapidly on the electrophoresis cell. ठीक है, अब है इसके बाद हमारा sedimentation potential of zonal membrane equilibrium. This is the potential difference set up between the top and bottom of the suspension of solid particles in a liquid when the particles settle under the influence of gravity. ये क्या है? एक potential difference है जो set करता है between the top and between the bottom of the suspension of solid particles in a liquid when the particles settle under the influence of gravity. वो क्या है? वो पार्टिकल सेटल और कब होगा? जब उसके ऊपर ग्रेविटी का इम्पैक्ट होगा. ठीक है, इन्फ्लुएंस होगा. प्रिंसिपल क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl is placed on one side of the semi-permeable membrane. On the other side, a solution of negatively charged colloid together with its counterion is placed. A volume of solution on the two sides of membrane are considered to be equal. जो solution में जो volume होगी two sides में membrane are considered to be equal. Sodium and chloride ion move freely across the semi-permeable membrane, but colloidal particles are not diffusible. Soon equilibrium is attained. ठीक है? Apply the condition of electroneutrality. The positive and negative charge on either side of the membrane must be balanced. अब क्या है इसमें? At equilibrium, the osmotic pressure of two solutions will be different, and if the two reference electrodes such as calomel electrodes are put into the two solution, then a difference of potential will set up. This type of equilibrium is known as donor equilibrium. सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी इसमें हम नेक्स्ट क्लास में इसका सेम टाइप सेम जो है इसके आगे फर्दर इसको हम कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए थैंक यू, इतना ही.
Have a good day. I hope this video will be informative to all of you. Thank you.